Question number 41. Question statement reads: a satellite of mass m0 is orbiting around the Earth at a height h above the surface of Earth. If the mass of the Earth is m and radius is r, then angular momentum of the satellite is. So angular momentum by definition L is equal to m0 v0 into radius of the orbit. The m0, then orbital speed of the satellite, that is gm divided by r ka root over, where r is the radius of the orbit, into r. So this is coming out to be m0 gm r ka root over. So that is equal to m0 under root g into m. What is the radius of the orbit? That is radius of Earth plus height. ये ना, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस है आपका r और h हाइट की ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है. तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r is equal to r plus h. So put here r is equal to r plus h. So angular momentum of the satellite is m0 under root gm r plus h. So correct option is option number 2. 42. Question statement reads: a man weighs 100 kilogram force on the earth surface, the true weight of the man. At what height above the earth surface its weight will be 50 kg force, means आधा हो जाएगा, where r is the radius of earth. So this is the question based on variation of acceleration due to gravity with height. So definitely variation of weight with height. You know the expression for variation of acceleration due to gravity, g dash is equal to g into 1 plus h by r raised to the minus 2. This is the variation of g with height. So if you multiply m both sides, this is the variation of weight. So as per the question, final weight is 50 kg force, initial weight 100 kg force into 1 plus h by r raised to the power minus 2. So if you rearrange, that implies 2 is equal to, that is 1 plus h by r whole square. That gives you 1 plus h by r is equal to root 2. That gives you h is equal to under root 2 minus 1 into r. So correct option is option number 4. Question number 43. Question statement reads: if the gravitational force varies inversely proportional to the distance r, then the orbital speed in the circular orbit of radius r is proportional to. Here the gravitational force is inversely as the distance r. So definitely I can write force is equal to gmm upon r. And this gravitational force provides the necessary centripetal force. So that is equal to m v orbital square upon r. So radius cancelled, mass cancelled. So v0 is equal to square root of gm. So this equation is independent of radius, means r raised to the power 0. So correct option is option number 4. Question number 44. Question statement reads: the ratio of the angular speed of satellite about Earth at perigee and apogee during its motion around the Sun in elliptical orbit of eccentricity e is. तो again this is based on your conservation of angular momentum. अगर ये आपका elliptical orbit है, ये उसका major axis and ये minor axis है, and Sun आपका यहाँ पे होता है at one of the foci, and ये होता है perigee का distance rp कहते हैं उसको. ये perigee होता है closest point and farthest point होता है apogee, और ये radius होता है ra, ये distance होता है from the sun, this is ra. और यहाँ about the sun इस पॉइंट के लिए एंगुलर स्पीड और ओमेगा पी है, और इस पॉइंट के लिए एंगुलर स्पीड अबाउट द सन इज ओमेगा ए है. तो ड्यूरिंग द प्लैनेटरी मोशन यू नो द टॉर्क अबाउट सन इज 0, सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. द एंगुलर मोमेंटम व्हेन द प्लैनेट इज एट पी पेरिजी, that is moment of inertia into the omega, and with respect to the sun the planet is assumed to be a point mass, so its moment of inertia is mrp square, mass into distance square into angular velocity omega p, and at apogee the angular momentum will be moment of inertia into the angular speed. What is the moment of inertia? mrs square into omega a. So ratio of omega p to the omega a, इसका रेशियो लेते हैं, तो that is ra upon rp का whole square. And again if a is the semi major axis, the major axis का आधा उसे semi major axis कहते हैं. a अगर आपका semi major axis होता है, तो ये जो rp होता है वो eccentricity से रिलेटेड होता है. rp का एक्सप्रेशन होता है rp इज इक्वल टू a माइनस ae. rp छोटा है तो a माइनस ae,
आर ए बड़ा है तो आर ए होता है ए प्लस ए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं दोनों को, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस ई अपन 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। सो रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड्स एट पेरिजी एंड अपोजी 1 प्लस एक्सेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्सेंट्रिसिटी का होल स्क्वायर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड्स a planet revolves in an elliptical orbit around the sun which is at one of its foci। और 3 स्टेटमेंट्स है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस गोइंग फ्रॉम ए टू बी via d। इन पाथ BCA वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम B to A via d इंक्रीजेस। फॉर द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़े हो माइनस Gmm/r। तो यहाँ पे न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर अगर आप A to B जा रहे हो भाया D, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आपका रेडियस ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते रेडियस यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो इसका है ये घटेगा, लेकिन नेगेटिव साइन है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो जब भी तुम्हारा डिस्टेंस इंक्रीज होता है प्लैनेट का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है, एंड रिवर्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है। याद होगा यहाँ पे हाईएस्ट स्पीड होता है, यहाँ पे लोएस्ट स्पीड होता है। तो लोएस्ट स्पीड मतलब हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी भाया डी, बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं इन द पाथ BCA वर्क डन बाई ग्रेविटी इज पॉजिटिव। देखो BCA अपोजी से पेरिजी, जब अपोजी से पेरिजी ऑब्जेक्ट आता है तो याद होगा उसका स्पीड बढ़ता जाता है, और जहाँ पे भी फोर्स के लिए स्पीड इंक्रीज होता है, फोर्स इज अप्लाइड एंड स्पीड इंक्रीजिंग, तो यू नो इट वेल काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, सो वर्क डन इज डेफिनेटली पॉजिटिव। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट फ्रॉम B to A via D increases। प्लैनेटरी मोशन अराउंड सन इज क्लियर एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्स फील्ड। और सेंट्रल फोर्स है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है बिकॉज देयर इज नो टॉर्क अबाउट द सन। तो एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज वाली बात है यहाँ पे, ये सरासर गलत है। सो ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। ओनली स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। Questions in this test are very much relevant to NEET pattern, and questions are to the level of the NEET pattern. So go on practicing these type of questions in plenty numbers such that you will not commit any mistake in these questions. Do not worry about amount of mark you have secured in this exam. You know it well, there is a chance of learning for every mistake. गलती है तो उसी से सीखते हो, तो वही सीखना चलता रहेगा आपका, तो अगले वाले टेस्ट में वो गलतियां नहीं होगी। तो ऐसे गलतियां करते रहो, मार्क कितना भी आए आप डिमोटिवेट मत होना, लगे रहना है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, क्योंकि ये गलती जब एक टेस्ट में हुआ और दूसरे में नहीं होगी, सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल होशियार होकर कर लोगे। गलतियां कुछ भी हो जाए, मार्क्स कुछ भी आ जाए, टेस्ट देना बंद मत करो। टेस्ट देते रहोगे तो आपका गलतियां सुधरती जाएगी और फाइनल एग्जाम में आप अच्छा करोगे। So keep on practicing. See you in the next discussion. Take care. Bye bye.